So, do you need script to record a videos? Do you like before making any videos? Do you have to prepare the script? The answer is yes. You have to prepare a script. So, how you can effectively prepare the script and what are the ways you can like in a right way you can prepare a script and what are the mistakes people make? I'm gonna tell you in this video. So, guys, my name is Virendra and I'm here to help 100,000 people to use the power of video marketing and build their own digital asset. So now let's talk about script. Yes, you need a script in every single form of content. If you are making any video content, you need a script. And what that means, that you have to write down every word to word. Means whatever single word I am saying, I have to write all those things in my computer or somewhere. And after that, while making videos, I have to read one by one, word to word, a letter I have to read. The answer is no. You don't have to create like that. This is not the way you should create script. Otherwise, what will happen? You will gonna lost your own flavor. You will not able to clarify a message in a like very interactive way because you are not able to express yourself most effective way. So if you are seeing me right now, this is like the best I can express myself right now. Okay, so you have to understand which is your best way to express. Otherwise, what will happen if you word to word you will create like what we can say, if you word to word create like a script, then there's a chance that you will have to stick with that only things. So I don't want to be like that. And you know what, the way you make your script is very important. People make script in a wrong way. So what are the right way? I'm going to talk about that. Okay, so now let's understand how to make effective script. So what you have to do, you don't need to make the script word to word. This is what which I have said to you, that don't make script word to word, like every single like this is what I have to say and after that this is what I have to say, this is what I have to say. Don't like that. How you can make that, or what will happen? So let's say you have made like that, then what will happen? You will look like a reporter or a teleprompter who is just reading his news. Do you like to be like those guys who just keep reading, who is not even looking and who is not even like expressing themselves in a right way, who is just reading the content? Nobody likes that. If you see the famous or let's say anyone YouTubers who is famous and who have made lots of videos, क्या देखते हो आप उनमें? तो कितना फ्रीली बात करते हो? क्या वो वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं. वो अपने तरीके से जो उनका बेस्ट हो सके उस तरीके से वो रिकॉर्ड करते हैं, अपने आप को जितना सके उतना एक्सप्रेस करते हैं. तो वैसे ही आपको वो चीज करना है. एंड डेफिनेटली इफ यू विल मेक लाइक दैट, देन डेफिनेटली पीपल watch your videos because information everywhere. The way you express your knowledge, I think that matters the most. So you have to be very expressive, you have to connect with them emotionally and you have to let them like make some in that way that your energy should like people should feel your energy while you are making videos, the same energy you are feeling. So let's talk about the one of the best way you can make your script, and that is important points. Write this down in your PC. If you are like seeing me right now, I have just written down the most important thing which I have to address. So I know that this is what I have to tell, and after that this is the point I have to tell, and after this is the point I have to tell. So I have structured in a proper way. This is what you have to do. You don't have to write down word by word. You have to make a proper structure. Yes, ये टॉपिक के बाद मैं ये टॉपिक के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इस चीज के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इस चीज के बारे में बात करूंगा. एंड जस्ट राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स, जो बहुत लाइक आप जैसे वो पॉइंट देखते आपको समझ जाएगी आपको क्या बात करना है. दैट्स ऑल यू नीड. And after that, what you have to do, you have to go with your own energy and your own flow. Like while I'm reading that, I'm also going through my own energy. I don't like just reading those full sentence, and I just see the bullet points. And उसके बाद क्या करता हूँ मैं, बस उस चीज पे बोलते जाता हूँ, जो भी है उस चीज में like और रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाता हूँ. But I have to just look at the bullet points. I'm not looking every single thing because I just prepared only bullet points. तो मैं किसी को देखूंगा बाकी के. So the reason for making script is you don't miss the important thing. So let's take example लेते हैं कि आप एग्जाम में जाते हो एंड वहां पर आप पेपर दे के आते हो, तो कितने बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन पे ये आंसर मुझे अभी याद आ रहा है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था आंसर, इससे अच्छा आंसर मैं दे सकता था, मैंने क्यों दिया नहीं. कभी ऐसा हुआ है कि पेपर खत्म हुआ उसके बाद सोचते हैं इससे अच्छा तो आंसर मैं और लाइक मेरे को तो और चीज याद आ रही है इसके बारे में, ये क्वेश्चन 8 मार्क का था, मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखा है, मैंने 5 पॉइंट और बाद में याद आ गए, अब भी याद आ रहे हैं. Because you know why? Because you have not like properly memorized those bullet points कि हाँ इस चीज मुझे लिखना है, इसके बाद ये चीज आता है, इसके बाद ये चीज आता है. And this is what you make mistakes while making videos. जब आप वीडियोस बनाते हो तो आप एक फ्लो में रहते हो डेफिनेटली. कि जब वो फ्लो में आप रहते हो तो उस फ्लो में एक गलती क्या हो जाता है कि गलती से आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हो. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियोस आप रियलाइज करते हो कि
ये चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने मिस कर दिया, ये भी मैंने मिस कर दिया। देन यू विल फील बैड कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि अगर मैं बना देता तो लोग को शायद बहुत अच्छा लगता वीडियोस, तो यू विल फील स्टार्टेड बैड कि हाँ भाई ये चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाएगा। एंड यस यू कैन मेक वीडियोस अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट क्या होता है कि यस हाँ, अब अगर बार बार वही सोचोगे कि हाँ भाई मैंने इधर गलती कर दिया, इधर मैंने ऐसे क्यों कर दिया, ये सब चीज़ तो इफेक्ट करता, थोड़ा तो इफेक्ट करता ही आपको। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू मेक स्क्रिप्ट। ओके, सो दिस इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं कर दो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग को हेल्प करेगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के कहीं से भी आप लोग डाल दोगे तो डेफिनेटली पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पहले इसके बारे में बताने का है, फिर उसके रिलेटेड इसके बारे में मतलब आपको स्टेप्स बताने का कि ये स्टेप छोड़ो, उसके बाद ये स्टेप छोड़ो, उसके बाद ये स्टेप छोड़ो, राइट? This is how you have to make script. And now when you are like, now what you have did, you have started making script and you are not like doing word to word, you are just having some bullet points and you are expressing yourself in a right way. And what you have to do after that, like what is the structure of the script? First is attention. You have to grab their attention. So in the starting phase, when starting this video, I have told you that do you need script to record a videos? And I have told you yes, you need script. But what are the right way, what are the wrong, which I'm gonna explain to you. I'm going to explain all those things. And that is the hook. I've grabbed your attention. There are people who think I don't need script, and there are people who think I need script, but they don't know how to make script. They just try to write down everything one by one, word to word. So that's why this is the first thing you have to write down. That is hook. Because the attention span of people is very less, so that's why you have to grab their attention. So that is first thing is hook. No matter what, first of all you have to think about your hook. And now second, problem. You have to address the problem. आपको उनका और अटेंशन चाहिए, आपको प्रॉब्लम उस जो आप टॉपिक के वीडियोस बना रहे हो उसके हर एक प्रॉब्लम बताइए उनको, रिसर्च कीजिए प्रॉब्लम के बारे में, क्या क्या वो लोग को प्रॉब्लम है उस चीज के बारे में, इतना बता दीजिए कि पागल हो जाए कि भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स है चीज में, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, ये प्रॉब्लम भी था, ये भी प्रॉब्लम था, इतना बता दीजिए आप लोगों को। एंड जब वो लोग सोचेंगे कि भाई इतने सारे प्रॉब्लम है तो अब क्या करूं मैं, अब ये जब सोचने लगेंगे ना, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन। यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन। जब आपको सॉल्यूशन सुनेंगे कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करने का, अच्छा ये भी एक नया तरीका है। जब आप सॉल्यूशन दोगे तो क्या कर रहे हो, वो कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, वो आपको एक ऐसा लाइक वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो आप उनके दिमाग में आपके लिए अलग ही कुछ पिक्चर बन जाएगा, राइट? बिकॉज वो देखेंगे कि इसको मालूम है सब चीज के बारे में। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू देन गिव अ सॉल्यूशन आफ्टर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, एंड यू हैव टू डू द प्रॉपर सॉल्यूशन। कि ऐसा नहीं कोई बस आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए जो जैसे जाके मतलब आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो दे कैन अप्लाई इट। So for that you have to do some research. आप थोड़ा बहुत थिंकिंग कर सकते हैं, आप लोग बताता है क्या प्रॉब्लम्स लोग के हैं, ये मैं किस से लाइक मोस्ट इफेक्टिव वे, किस अच्छे से कितने अच्छे तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, दैट। एंड इन द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉल टू एक्शन। सो इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो डेफिनेटली आपको पहले हुक से उन लोगों को अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम के बारे में बात करना पड़ेगा, सोल्यूशन, एंड फिर आपको अपने प्रोडक्ट या आपका जो सर्विस है आपको बताना पड़ेगा क्यों वो चीज़ बेस्ट है इस टॉपिक के लिए, इस फील्ड के लिए। And if you like making this video like me, if you have to just help people, so what you have to tell that if you're watching this video, go hit a like and subscribe button and let me in the comment section what kind of problem you have and what kind of problem I can solve. And if you want to watch more kind of like if you want to watch more of this kind of videos, then you can hit the notification button. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram. My ID is Virendra, VIRENDRA 438. This is my Instagram account. You can go and follow me there. So this is how you have to give a call to action, or you have to say that go and follow me here and go and follow my Facebook group. Here I am upload content, and this is like this kind of call to action you have to make. You have to make them do some action. So guys, this is the best way you can create a script and in a very proper structured way. So like first you are like getting their hooks, like you're getting their attention, and second you are addressing the problem. They're watching the video, they continue to watch your videos, and after that they're watching the solutions, they're learning, like they're thinking that you are the one who can solve their problem, and after that what they think that yes, this guy has some idea about those things, so let's follow him, whatever the action he's selling, let's subscribe him, let's see whatever the information he can give me. So that's why they're gonna start following you, they will start gonna ask more problems, and that's why you're gonna start helping those people. This is how you can build your audience. And in the end, what is the most important thing while recording a videos? You should have the smile, like me. You have to smile while recording a videos, otherwise nobody like the sad guy who's making videos. Definitely किसको पसंद है जो उदास मुंह लेके अपना वीडियोस बनाएगा, किसी को नहीं पसंद।
So for that you have to smile. Alright. So that's all guys, and start creating the script for your videos in a right way. The way I've told you, that first hook, problem, solution, call to action. These are the 4 ways you can take, and in the last you have to smile while recording your videos. So guys, that's all, and start getting your own script.